फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमानुएल मैक्रॉन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, वंशवार, जोहार। एक ही महीनों में एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि दो देशों के नेता लगातार एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवस परेड और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। हमारी दोस्ती के गहराई और हमारी साझेदारी की मजबूती का 14 जुलाई 2023 और 26 जनवरी 2024 से बेहतर कोई प्रतीक नहीं हो सकता। भारत आज का 75वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल 2 वर्ष बाद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान लागू किया। इससे भारत एक गणतंत्र बना। हम भारतवासियों के लिए ये कोई नई शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम सहस्राब्दियों से गणतंत्र की अवधारणा से परिचित थे। इस प्रबुद्ध संविधान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को आकार दिया है। इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विविध समाज को एक साथ जोड़कर रखा है। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय इसकी आधारशिला है। राष्ट्रपति महोदय, इन मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए फ्रांस के हमारे मित्रों से बेहतर कौन हो सकता है। आज के देश के निवासियों ने, आपके देश के निवासियों ने 200 साल से भी पहले इन्हीं मूल्यों का आह्वान किया। अपने देश को एक गणतंत्र का स्वरूप दिया और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित किया। हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिन मित्रों ने आज़ादी के बाद की हमारी यात्रा के सबसे कठिन चुनौतियों में हमारे साथ दिया, वे आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद है। लेकिन हमारे संबंध इससे भी ज़्यादा गहरे और पुराने हैं। इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों में हमारे लोगों ने अपने विचारों और आदर्शों से एक दूसरे को प्रेरित किया। हमने दर्शन, साहित्य, कला, धर्मग्रंथ, भाषाओं और यहाँ तक कि रत्न, आभूषणों और सूत्रोकला के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध किया है। एक तरफ यदि सोज एलिजे और कर्तव्य पथ मार्च कर रहे हैं हमारे सैनिक हमारी एकजुटता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर एफिल टावर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या गेटवे ऑफ इंडिया पर डियर फैशन शो का आयोजन हमारे गहरे संबंधों को दर्शाते हैं। पेरिस भारतीय पर्यटकों के लिए एक प्रिय गंतव्य है। ऐसे ही फ्रांस विदेशों से भारत में पर्यटन आय में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक है। पिछले साल 4 प्रमुख पेरिस संग्रहालयों ने भारतीय प्रदर्शनियों की मेजबानी की। खान पान के मामले में भी हम अपनी अपनी विशेषताओं से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस तरह फ्रांस में प्राचीन भारतीय भाषा और वैदिक अध्ययन के दिग्गज विद्वान हैं, उसी तरह भारतीय छात्रों में फ्रांस भाषा बहुत लोकप्रिय है। सिनेमा की तरफ देखें तो वहाँ भी भारत और फ्रांस जुड़े हुए हैं। चाहे वो हमारे प्रख्यात निर्देशकों पर फ्रेंच न्यू वेव का प्रभाव हो या कान के रेड कारपेट पर भारतीय फिल्मों और सितारों की बढ़ती उपस्थिति। पिछले साल अगस्त में मुझे पुडुचेरी जाने का अवसर मिला। वहाँ मैंने विविध प्राक सांस्कृतिक धाराओं का अनोखा मिश्रण देखा। पुडुचेरी की वास्तुकला, त्यौहार और जीवन शैली एक जीवंत परंपरा है, जहाँ फ्रांसीसी प्रभाव भी देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों का फ्रांस के प्रवासी भारतीय समुदाय से भी गहरा संबंध है। मुझे वहाँ अनुभव हुआ कि दरअसल पुडुचेरी फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती का जीवंत पुल है।
देवियों और स्वजनों, हस्तशिल्प से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और फ्रांस भविष्य की ओर एक साथ अग्रसर है। हम साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे लोगों, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए मायने रखता है। ये आशापूर्ण भविष्य समान अवसरों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, अनुसंधान और नवाचार का और स्वच्छ वातावरण का हम निर्माण कर रहे हैं। मजबूत और सफल फ्रांस का, सुरक्षित और विकसित भारत का और एक शांतिपूर्ण विश्व का। राष्ट्रपति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने 2047 तक भारत के अमृतकाल के लिए हमारी साझेदारी की एक महत्वाकांक्षी विजन की रूपरेखा तैयार की है। आज हमारे साथ आपकी उपस्थिति ने इस विजन को पूरा करने के लिए हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया है। आज हम दुनिया के सामने एक साथ खड़े हैं, दो महान गणतंत्रों जिनका मानव प्रगति में विशिष्ट योगदान है, जो विचारों में स्वतंत्र, नीतियों में जिम्मेदार और दुनिया की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मित्रता की सहजता और हमारे साझेदारी की ताकत हमारे भविष्य की यात्रा को उज्जवल करेगी। इन शब्दों के साथ महामहिम देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, फ्रांस के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। Madame la Présidente, Madame President, Mr. Prime Minister Dear Narendra, Mr. Vice President, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, my fellow compatriots will forgive me, I will express myself directly in English in order to be collectively, I would say, more efficient. First and foremost, allow me to thank you for the exceptional welcome that has been extended to our delegation and myself today. It is with an immense pleasure that we are here and to come back 5 years after our former state visit and 5 months after the success of your G20. And we were extremely honored to be part of such an important and unique day and to have our soldiers being alongside with you and being part of this exceptional moment. I think this is, for everybody here in this delegation, in our memories forever. Thank you very much. And we do appreciate the honor made to all of us. Clearly, we don't seem to be able to stay apart, I have to say. For some reason, our meetings have the warmth of the friends meeting again, without losing the freshness of new discovery. It's exactly like that each time we meet together. And you were, for Bastille Day, a few months ago, 14th of July, in France, and being here do confirm the warmth of our link and the intensity of these links. And this is probably due to the very special relation we have together. And the fact that between India and France there is something very special because we do share a lot of similarities. Taste for history, culture, creativity, gastronomy, and this willingness not to be aligned to anybody else and to remain independent and have and defend our own path. We do share the same approach, the same history. And I have to say, yesterday I was delighted, Mr. Prime Minister, to discover Jaipur with you. We had a wonderful stay, and from Amber Fort to Palace of Winds, through the city, it was extremely moving and definitely referred to poems of Tagore, translated into French by
André Gide and other poets and novelists, which is part of our common culture of India and France because it was translated 1 century ago. And I will not forget the chai we shared together close to the palace, because it was a chai paid with UPI. And this is the perfect synthesis of why it is so special. Friendship and the warmth of such a celebration, tradition, and innovation. And this is exactly what we do together and what we want to do together. And this ceremony was for me a sort of metaphor of the whole relation we want to have and we will have. And from scientific links to culture, to education, to defense industry, nuclear energy, and all the different sectors being present here, I have to say that the intensity is due to the fact that, indeed, we do share this willingness to have warmth and friendly common approach, to respect our tradition, especially our culture on both sides, but to build together the future. This is exactly what is core for the ambition of our own friendship. And yesterday, right before this tea, we went to the Jantar Manta that we visited together. And I don't forget that it allowed 2 French Jesuit astronomers in 1734 to determine with precision the latitude and longitude of Jaipur. It was undoubtedly, as well, the first space cooperation in history. And we did it together between India and France. This is why we do want to have other space cooperations and other cooperations in all the possible fields. We signed together 2047 roadmap last July, including all possible altitudes, I would say, from the ocean to space, all the different fields, from culture to industry and digital and clean tech, and which will strengthen our bonds. This partnership is a partnership for both of us. This is a reciprocal and a respectful partnership. But this is, I do believe as well, a useful partnership for the rest of the world. Because we do share the same vision of Indo-Pacific region as well. A region which should not be spoiled and trapped by the hegemony of some powers, but a region that we want to see free and open. And this free and open Indo-Pacific, it's, I think, one of the anchor of the bilateral relation we have, because we do share the same values and the same principle for the whole region. I think this is exactly what we conveyed together from the COP28. This is what we will convey together, what we conveyed together during your G20, and thanks again for your leadership. And this is what we will do together from the United Nations Conference for Oceans that France will host in 2025. And definitely in the meanwhile, this is what we will do share as well for our Olympic Games that we will organize this year. And we will be delighted to build a stronger cooperation on sports and this type of event as well with you, as we will definitely support your intention to organize Olympic Games in India for the future. Dear President, dear Prime Minister, dear friends, I don't want to be longer here, as this is a moment of celebration and friendship. But everything in the moments we share, in this alliance of warmth, humility, and very important and official celebration is the same: respect and friendship. And we have a lot of things to do together for the months and the years to come and the decades to come. What we have to do, as you fairly said, Madam President, is largely dedicated
to the young and future generations. But it is based on this history, these common principles, and our willingness to work closely together, because this is you and because we are here. Just to try to quote another French poet. I want now to celebrate with you the friendship between India and France that we cherish, and be sure that we will remain committed to this friendship. Long live the friendship between France and India.